There we go, yeah. Thank you, Gobin. Thank you for that. Yeah, so this is our new 650 Bear. I'm super pleased with this motorcycle. I think it's come out really well. The backstory to this is just fantastic. So you've heard about Eddie there. And back in the 1960s, when Royal Enfield was looking at those desert races and the success we had there was an idea from the factory back in the UK to build a bike specifically for export to the US. So they took essentially a Constellation at the time, and they put some knobbly tyres on it, and they put some parts on it, and shipped it out to the US, and they called it the Interceptor. And that was the first time the name was used at Royal Enfield. They were called the VAX Interceptors. They made like 120 of them. They're very rare now. And then on the back of that, they then built the 650, and they built what they called the Road Scrambler. So the connection between Interceptor and Scrambler has always been there, and it has always been very strong. And so this just seemed like a natural product for us to do at Royal Enfield. Also, we've seen all the way around the world, lots of our consumers, taking our Interceptor and building scramblers of their own. So with this product, what we wanted to do was go a little step further than that. We wanted to do some things to this that you couldn't do as a consumer unless you had a lot of time and experience and knowledge. So starting at the front of the bike here, we've got all new LED headlights at the front, LED indicators. We've got the TFT that you'll have seen on the Himalayan before with our fantastic Tripper Dash, which syncs with your phone. You can use for navigation. We've made some recent updates to the app, so you can now import GPX files and so on. And so, continuously evolving that. Coming down, we've got Showa upside down front forks. These are 43mm upside down forks. These transform the handling of this bike. This bike is so planted now. You can, on a canyon road, you can push the front end, you can bury it. It's such a lovely planted machine. It really makes a huge difference to how the bike feels. We've got uprated brakes at the front. We've got tyres. So the tyres are developed with SEAT. We've worked very closely with them to come up with these tyres, working with our chassis development team to really create a tyre that works well in kind of loose dirt conditions, but also on the road. So you'll notice that, if you look at what we call the land to sea ratio, the amount of rubber that you've got contact in the road and the amount of space you've got to dig into the dirt, we've done that in a way that when you're on the road, it doesn't walk around on the tyre. So when you're on the road, this feels like a road tyre, but when you get into a little bit of the loose, it digs in and picks up and just works really well. Moving back, we've strengthened the frame, so we've worked on the headstock a little bit. We've put some strengthening in the headstock. We've also strengthened the rear of the frame. That allows you to take more luggage. You can put more, more equipment on the back. You can put a top box on the back. You can put kind of loose luggage on the back there, so increasing the carrying capacity. The engine, we've got a new 2-in-1 exhaust. And what that's done is that's given us a little bit more torque. So we've now got a slightly improved. बाइक ना पूरा रॉ दिख रहा है, मीन्स आप देखना बीच में वायर्स वगैरह निकले हुए थे, एज वेल एज इसका मतलब वो जो फ्रेम थोड़ा सा कलर दिया, अब इसके कलर कौन से वो देखने पड़ेंगे। ट्यूबलेस टायर है कि कौन से टायर से वो पता नहीं, वो इन्होंने नहीं बताया, बिकॉज देयर इज स्पोक रिम्स है। Torque curve across the entire range of across the entire of the rev range. We've got these lovely side panels now with the number boards on, which are really evocative of that kind of era, that desert racing, that scrambles, that hare and hound scrambles imagery. And obviously in these colorways, you can see we've got, on the others we don't have a number, but on this one we've got Fast Eddie's number. So this is 249. This was the number that he used when he was riding in the Big Bear Run, as a 16-year-old at that point. So moving back towards the back of the bike, we've also kicked up the back of the frame. That gives us a little bit more clearance at the rear. New tail light, new LEDs at the back, and I think all of those combinations together has given the bike a real kind of presence and a stance that I think really works. And so overall, I think it's a great new bike. Really encourage you to test ride it. I think it gives a very different character. डिजाइन एक ऐसी चीज है ना, मतलब हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। अभी ये लाइट पर बड़ा फनी लग रहा था मेरे को, बट ये काफी लोगों को ये पसंद भी आता है। एंड दिस कलर कॉम्बिनेशन और बाइक का डिजाइन, हर किसी को सब कुछ पसंद नहीं आता है। See. Character to the Interceptor and is a real great addition to our lineup. So I'm going to hand you back over to BGR now. Thank you, Mark. That's not on. I think also Royal Enfield has also launched this electric bike. That is मतलब अलग ही लग रहा है वो।
मतलब इट लुक्स सो स्लिम। अभी रियल में पता नहीं कैसा दिखेगा, बट जो कमेंट्स भी आ रहे हैं साइड में ना, ये बोल रहे हैं कि यार ये कितनी पतली वाली बाइक लॉन्च कर दी। There's one more in our journey today. This time we will rewind further back to 1948. Parallel twin. Classic 650 from Royal Enfield. Mark? दिस क्रोम क्रोम कलर ना मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, बट इसका प्रॉब्लम वही है ना कि मतलब इसको मेंटेनेंस काफी ज्यादा वहां पे हो जाता है। एंड जावा के पास भी था ये जो सिंगल सीट वाला, तो उसके बाद फिर काफी सारे आफ्टर मार्केट दे आर पुटिंग दोज एक्स्ट्रा पिलियन सीट लगाने के लिए। यार मतलब पिलियन वाली बाइक, सीट वाली बाइक ले लो ना, मतलब इसके ऊपर लगाने का क्या मतलब है? अदरवाइज क्रोम लुक इज रियली नाइस। ओनली थिंग इसके मेंटेनेंस का बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो शाइन ना धीरे धीरे लूज हो जाता है ना, वो फील चले जाता है बाइक का। Mark? Now I'm Makes bike. By going to the 650, this means that the classic format, the classic genre, is now highway capable in countries where you've got those higher road speeds. So, you know, as you can with our other 650s, you can sit there at highway speeds and the bike works really well. You know, visually, if you look at this bike, lots of metal, lots of authentic, proper Royal Enfield character, heritage. So, you know, starting with that iconic casquette or nacelle, the headlight part that has that real kind of speed form, 1950s streamlined feel that works really well with the bike. Working through, we've kind of taken the stance of the bike, because the engine is canted forward a little bit. We've italicized the whole bike, so the whole bike kind of leans into it a little bit more and just has this beautiful form that runs through it. You know, I think in this chrome colorway and also in the teal colorway, I think both of them just stand out to me. I जो रिसेंटली 650 का जो लॉन्च हुआ था, सुपर मीटियोर, दैट बाइक वाज आल्सो नाइस। उसका रेड कलर मेरे को काफी अच्छा लगता है, बट उसके भी काफी सारा जो कंप्लेन लोगों का ये आ रहा था ना बाइक को लेके, कि आफ्टर सर्विस इज नॉट दैट, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एंड इट्स नॉट अप टू द मार्क। मे बी पीपल शुड वेट 1 or 2 years टू रॉयल एनफील्ड फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये हर बाइक में प्रॉब्लम तो रहता ही। अभी ये नए वाले में इन्होंने, आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम रहना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स इधर उधर से ले रखे हैं। जैसे लाइट सुपर मीटर का दिख रहा है, डिजाइन तो प्रॉपरली उठा लिया 350 से, और ये इंजन तो ऑलरेडी नया कुछ इन्होंने इन्वेंट नहीं किया है, बट नथिंग न्यू, बट ओवरऑल लुक्स अच्छा है। ओनली थिंग इज अभी ये बाइक इंडिया में जैसे इंडिया में अगर मिनिमम 4 लाख तो आपको पड़ ही जाएगा। आप मतलब इसका जो बोलते हैं, इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम रॉयल एनफील्ड में आप जब जाएंगे ना, यू विल गेट दैट एक्स शोरूम प्राइस अलग रहता है, ऑन रोड प्राइस ना बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस वहां पे आ जाता है। सो इट विल बी इजीली 4 लाख एंड अबव। 4 लाख एंड अबव में what is the target segment of customer Royal Enfield is thinking about when they are launching this bike? Because इंडिया में अभी भी स्टिल जो मिडिल सेगमेंट है, वो लोग जब बाइक लेते हैं, दे नीड बाइक विच कैन गो टू, दे कैन गो टू द ऑफिस, ऑफिस जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, टूरिंग कर सकते हैं। अब इस बाइक में आप ना ही वो लगेज वगैरह लगा सकते हैं। what this bike is designed for, that I need to understand from Royal Enfield. uh, इसमें नहीं, बिकॉज हिमालयन में यू कैन ऑब्वियसली पुट ऑल दी बैग एंड टॉप बॉक्स वगैरह सब कुछ लगा, इसमें जगह नहीं है। और आफ्टर मार्केट वहां पे लगाना, अगेन दैट विल बी इंक्रीज इन प्राइस। सो व्हाट सेगमेंट इट इज रॉयल एनफील्ड इज टारगेटिंग टू द कस्टमर्स? love the way these bikes look. They've got a very classic upright riding stance, straight back. You know, you have that kind of confidence that is unique about Royal Enfield. You know, I think it really stands out as a product that no other brand could do. And I'm really looking forward to seeing people out on the roads on this. So, yeah, thank you very much. Back to BGR. Enfield Shotgun 650 and Icon collaboration motorcycle. It's a stunning custom build. We look at what you have been waiting for, I'm sure, about the price and when this motorcycle will be available. So I just want to know from आप लोग, ये भी कमेंट्स में बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, लाइक पीपल आस्किंग फॉर हिमालयन न्यू कलर्स। वन थिंग व्हिच आई नेवर अंडरस्टूड अबाउट दीज कलर्स, मतलब आप सेम बाइक में अलग अलग कलर से आपको प्राइस कैसे 10,000 से 20,000 का कैसे डिफरेंस आता है, दैट आई नेवर अंडरस्टूड फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। बिकॉज लाइक व्हेन आई वेंट फॉर दिस रॉयल हिमालयन 450, जो सबसे बेसिक वाला है, आई थिंक द जिसमें कोई डिजाइन नहीं है, जो मिट्टी कलर का है हिमालयन का, राइट? सो लाइक 3.60 या 70 तक कुछ जा रहा था।
एंड जो टॉप वाला है दैट गोल्डन एंड ब्लैक वाला दैट वाज 4 लाख के आसपास इजीली टच हो रहा था। तो 30,000 का कैसे डिफरेंस आ जाता है कलर के साथ? इफ समवन इज हैविंग द नॉलेज वो बता सकते हैं कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब आइदर आप सारे कलर 10,000 लगा के आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट हर एक्स्ट्रा कलर के साथ 10,000 10,000 10,000 यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा, दैट वी नेवर, दैट मेरे को कभी नहीं समझा। इवन इन द क्लासिक 350 का भी जो सेगमेंट था उसमें भी सेम चीज आता है। इवन हिमालयन का 411 वाला था उसमें भी सेम था, बट आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर इज सो मच ऑफ प्राइस राइज व्हेन दे आर चेंजिंग द कलर। किसी को पता है तो कमेंट में जाके जरूर बताइए।